Dada, why? Why, Dada, why? This is business. Shut up! देवांश, क्योंकि आप अभी जैसे ग्रेजुएट हुए और आपकी जॉब वगैरह भी लग गई थी और पर आपने स्टार्टअप चूज किया, तो आपके कुछ फ्रेंड्स या क्लासमेट्स ऐसे भी होंगे जिनकी जॉब लगी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और शायद जॉब स्टार्ट हो गई या करने वाले होंगे। तो वो आपके पास कभी एडवाइस के लिए आते हैं कि यार कुछ बता दे, हमें अपना स्टार्ट करना है, या फिर वो ऐसे बोलते हैं आपको कि भाई तेरी लाइफ तो सेट है, तूने अपना स्टार्ट कर लिया कॉलेज में, ऐसा कुछ बोलते हैं? हाँ, so particularly I'll give you that insight there which we discussed कि मेरे को शुरू से it wasn't a thing कि मेरे को जॉब नहीं करनी और मेरे को अपना स्टार्टअप ही करना है particularly। ऐसे कुछ आइडियाज नहीं थे मेरे माइंड में। जब मैं कॉलेज में एंटर किया था, I entered with a blank slate कि let's try out everything, जिस चीज में मजा आ रहा है we gravitate towards that ultimately, right? It's a lot more of having sort of a playing mindset कि ठीक है ये गेम खेल के देखते हैं, ये नहीं हुआ तो अगला गेम खेल के देख लेंगे, so experimenting, right? So which is why particularly I think one thing that I definitely see in a lot of my friends are doing jobs at amazing companies, whether it's Zomato, Google, Microsoft, Amazon, right? And so the number one thing is they get weekends free, so which is something that I never get as the founder, right? Even on Sunday, so today is a Sunday, right? And which is why we could take out an hour for this, but as soon as this ends I still have to go back to work, whereas they can afford to chill ki Saturday, Sunday at least, and Monday to Friday they can work, so that's there. But particularly हाँ वो emotion आता है या फिर it's just sarcastically ऐसे jokes चलते रहते हैं friends में कि अब तो you're owning a company and stuff like that, but ultimately just a lot more about what's right for you. There is no good or bad, like it's not कि starting a company is the good thing and doing a job is bad or anything. It's very personal to what you want to do, and for me it was just that कि ठीक है, I can afford to take that risk particularly. And even if it fails me 1-2 साल बाद, I can still go back to doing a corporate job. And my friends के लिए कि right now they're doing a corporate job, maybe after a couple of years they feel यार अब I'm in a right place कि ठीक है 2 साल हो गए, पैसे भी कमा लिए, सब हो गया, I can start a company. So now they can also shift to that. So it's a lot more, यार. It's not a straight race, so which is why it's very dynamic, and it's fine to shift between the two things. एंड देवांश, आपने अपनी स्टार्टअप जर्नी और कॉलेज जर्नी से जो सीखा वो, और एडवाइस जो आप कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर या जो कॉलेज में स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहोगे? Sure. So particularly, right, so I have this thing that I often say that the optimum human mindset is to be in a state of playing, right? So everything, right, life में what happens is often you are your biggest enemy, right? And that I've seen कि जो मेरे personal fears, shame, guilt जो मुझे किसी चीज का होता है, for example, right, कि for example मैंने IIT नहीं क्रैक किया, right, और मैंने इस चीज में अच्छा नहीं, जो मेरे फियर्स हैं और मुझे या तो डर लगता है सोशल इंटरेक्शन में, जैसे पहले लगता था कि मैं बात नहीं कर पाता लोगों के सामने, सो ये चीजें ही हमारे बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं. एंड द ओनली वे टू काउंटर दीज दैट हैज वर्कड फॉर मी is just don't take life very very seriously, right? Just try and think of everything as a game particularly. So the for example, you're in college, right? The current semester that you're going through, just think of this semester as a 3 to 6 month long game, and once you're in the game, do your best to win the game, right? Be competitive, उसमें कोई issue नहीं है. It's natural human instinct to be competitive, so it's fine. Do your best to win the game, but अगर नहीं जीते, नहीं perform करते, it's fine. Brush off the failure, अगले पे जाओ. क्या होता है, हम कॉलोनी में फुटबॉल खेलने जाते हैं, एक रात जाते हैं खेलने, एक शाम को गेम में बहुत इंटेंस खेलेंगे यार, जीतना है जीतना है, नहीं जीतते कोई नहीं, कल फिर से खेल लेंगे, परसों फिर से खेल लेंगे. So just try and be in that mindset and not take yourself too seriously, because then you stop being your own enemy. A lot of times you become your biggest enemy. Just stop being your own enemy and take life less seriously, because that's how you can ultimately have a sustainable, happy life which is filled with success.